This is the Saint Mary Church and Cemetery. The church was built in Gothic style in 1810 CE, now standing only to a height of 2 to 3 feet. It is surrounded by a cemetery first used during the siege in 1857. The enormous number of casualties forced the dead to be dumped into the ground near the church, with no burial service other than a brief prayer. It also served as a granary during the siege. In this strange setting, history sleeps on. Apart from Sir Henry Lawrence, Francis Allen Hale and his wife, Lieutenant James Fullerton, Miss Susanna Palmer, Thomas John Clancy, etc., and countless others slumber on this patch of land. There was a sheep house and slaughterhouse to the south of the church. Beyond them, there was Racket Court and Gubbins House, the financial commissioner during 1857. Wanderlust जर्नी अदब अवध में आपको अंदर लेके आता है सिमेट्री के। आप ये देख सकते हैं, ये उस टाइम के जो ऑफिसर्स कमीशन्ड थे यहाँ पे, उनके मेमोरी में यहाँ ग्रेवयार्ड्स है, कब्र है। ये कब्र है विलियम जॉन रूलेफ का, जिनके वाइफ ने 1857 के दौरान जो किचन हाउस रसोई घर है उसको ऑक्यूपाई किया था। इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऑफिसर्स एंड जनरल्स के ग्रेवयार्ड्स हैं, उनके टूमस्टोन्स हैं यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा देर वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है। वॉन्डरलर्स जर्नी @driveon_bg व्लॉग्स को अलाउ किया गया विद अ लिमिटेड टाइम फ्रेम यहाँ पे शूट करने का, वीडियोग्राफी करने का। ये है इन द मेमोरी ऑफ मेजर J.E. Simmons, कैप्टन J.W. Lestrans, Captain A.E. Johnson, Captain W.M. Carter, Lieutenant E.J. Haig, Lieutenant J.C. Brown, 5 sergeants, 2 corporals and 77 privates. Huge it is.
It is huge. This is huge. This is in the memory of Lieutenant Commander C. Seymour और उनके बटालियन का. This tombstone is erected by the officers of HM90 Light Infantry in memory of their comrades who fell during the Indian Rebellion of 1857. So guys, this is the cemetery Adab-e-Awadh कि the residency tour का end है. I hope I was able to bring this piece of history in front of you guys through my lens. Pardon me if I missed on anything. We had limited time frame to shoot. Wanderlust Journey giving his salute to the mark of history from the cemetery. May the souls rest in peace. This is a hammam of that time. चलिए इसी कॉरिडोर से आपको बाहर लेके चलते हैं. इसी कॉरिडोर से हम एंट्री हुए थे. ये कॉरिडोर है इन्फेंट्री हाउस, जो कि ट्रेजरी भी हुआ था. शायद मैं यहाँ का ट्रेजरर हूँगा उस टाइम पे. Adab-e-Awadh, the residency tour ends here. Today the national flag is waving. See how beautiful our flag looks. One salute to the flag as well.